बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में और इसमें हम देखेंगे कि जुडिशरी का एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किसी स्टेट के अंदर क्या रोल होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने एग्जेक्टिव के बारे में बात की, लीड थ्योरी के बारे में बात की और फिर इससे आने वाले लेक्चर में मज़ीद में इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी के बारे में लेक्चर आप तक पहुंचाऊंगा। तो तमाम लेक्चर्स आपने देख लेने हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल फिलासफर जितने हैं वो तमाम लेक्चर्स भी यूट्यूब चैनल पर गिवन है, आप वहां से जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जुडिशरी इट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है जी। It has the responsibility to apply the laws to specific cases and settle all disputes. The real meaning of law is that what the judges decide during the course of giving their judgment in various cases. From the citizen's point of view, judiciary is the most important organ of the government because it acts as a protector against the possible excesses of legislature and executive organs। ठीक है जी। तो ये इन बिटवीन जो एक लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव हैं, उनके दरमियान एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले करती है और सिटीजन्स के लिए जो है वो एक वेलफेयर का काम रोल प्ले करती है। कोई भी ऐसा काम अगर लेजिस्लेचर की तरफ से होगा, एग्जेक्टिव की तरफ से होगा जो पब्लिक वेलफेयर का नहीं है, तो जुडिशरी जो है वो एक प्रोटेक्टर के तौर पे कंसिडर की जाती है। Role of judiciary as the guardian protector of the constitution and the fundamental rights of the people makes it more respectable than other two organs। ठीक है जी। तो चूँकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कोई भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं पीपल के, उसकी जो गार्डियन है वो ये समझा जाता है कि जुडिशरी होती है और इस एक इम्पॉर्टेंट रोल की वजह से उसको ये समझा जाता है कि इसकी अहमियत जो है वो बाकी दो जो आर्गन्स होते हैं किसी स्टेट के उससे ज़्यादा है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू गिव द जस्टिस टू द पीपल। The first and foremost function of the judiciary is to give justice to the people whenever they may approach it. It awards punishment to those who, after trial, are found guilty of violating the laws of the states or the rights of the people. The judiciary fixes the quality of the punishment to be given to the criminals. It decides all cases involving grant of compensations of the citizens। तो सिटीजन्स को जो है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना सबसे मेन फीचर है जुडिशरी का। इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, लॉ बना लिया, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो है उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसकी डेरिवेशन जितनी भी है वो जुडिशरी करती है। One of the major function of the judiciary is to interpret and apply laws to specific cases। यानी एक लेजिस्लेचर है, मकरना है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, उसने एक लॉ बना दिया, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दी, उसको फर्दर जो इम्प्लीमेंट करना है लॉ की फॉर्म में, केसेस के अंदर डिसीजन की फॉर्म में, वो जुडिशरी ने करना है। और मीन वाइल एक जुडिशरी का ये काम है कि कोई भी लॉ बनेगा तो उसकी वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। In the course of the deciding the disputes that come before it, the judges interpret and apply laws. Every law needs a proper interpretation of getting applied to every specific case. This function is performed by the judges। The law means what the judges interpret it to mean। ठीक है जी। और इसके अलावा रोल इन लॉ मेकिंग, द जुडिशरी आल्सो प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग। द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट्स really determine the meaning, nature, and scope of laws passed by the legislature. The interpretation of laws by the judiciary amounts to lawmaking, as it is these interpretations which really define the laws. Moreover, the judgments delivered by the higher courts, which are the court of records, are binding upon lower courts. The latter can decide the cases before them on the basis of decisions made by the higher courts। So, judicial decisions constitute a source of law। Or equity legislation, where a law is silent or ambiguous or appears to be inconsistent with some other law of the land,
and the judges depend upon their sense of justice, fairness, impartiality, honesty, and wisdom for deciding the cases. Such decisions always lawmaking. It usually terms at equity legislation. ये भी एक important जो है function है. Things are very simple, so मैं इसको बहुत ज़्यादा explain नहीं कर रहा. Protection of rights, yani the judiciary has the supreme responsibility to safeguard the rights of people. A citizen has the right to seek the protection of the judiciary in case his rights are violated and threatened to be violated by the government or by private organization or fellow citizen. तो कोई भी ऐसा सिटीजन जिसके कोई भी हकूक स्टेट की तरफ से एग्जेक्टिव की तरफ से उसके जो है वो सोसाइटी के अंदर किसी भी पर्सन की तरफ से या किसी भी ये नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या बिजनेस फोरम की तरफ से कोई राइट्स उनके जो है वो उनको नहीं मिल रहे हैं, उनकी बेसिक राइट्स जो है वो एब्रोगेट हो रहे हैं, तो जो जुडिशरी है वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करके उसको प्रोटेक्शन देती है, सेफगार्ड करती है और उसकी सुनवाई करती है. सिमिलरली गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो लेजिस्लेचर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, लेकिन जो जुडिशरी है वो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इंटरप्रेट करती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, बल्कि वो गार्डियन होती है किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की. और वो एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को बाउंड रखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करें. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जुडिशरी की जो पावर्स होती हैं वो एग्जेक्टिव्स और जो जो लेजिस्लेचर होती है उससे ज़्यादा होती हैं. तो वो जो है चेक्स एंड बैलेंसेस के सेंस में भी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं. और इम्पोर्टेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी स्टेट का, उसको एक गार्डियन होती है. Power to get its decision in judgments enforced. The judiciary has the power not only to deliver judgments and decide disputes, but also to get these enforced. It can direct the executive to carry out its decisions. It can summon any person or directly know the truth for him from him in case any person is held guilty of not following any decision of the court, of acting against the direction of the court, misleading the court, or of not appearing before the court in a case being heard by it, the court has the power to punish the person for the contempt of court. तोहीन अदालत अक्सर आपने सुनी होगी. तो ये नहीं, जुडिशरी का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि वो जस्ट डिसीजन दे दे और बातें करे, इंटरप्रिटेशन कर दे, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन और जो जजमेंट्स की इन्फोर्समेंट है उसके अंदर भी उसका की रोल होता है. और अगर कोई उनको अवे नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की फॉर्म में जवाब तलबी भी होती है. और कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, जैसे आईजी होता है या मिनिस्टर्स होते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर होते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर भी, तो उनको जुडिशरी किसी भी स्पेसिफिक इशू के ऊपर कॉल करती है और कॉल कर सकती है. जो फेडरेशन होती है उसके अंदर भी जो है जुडिशरी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. सिमिलरली एक रनिंग दी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एक ये एक सुप्रीम कोर्ट की फॉर्म में ही नहीं होती, बल्कि सिर्फ हाई कोर्ट की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि लोअर कोर्ट्स भी होती हैं. और एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी जुडिशियल सिस्टम का और जुडिशरी का. और वो जो है मल्टीपल डोमेन्स के अंदर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं. इसी तरह से एडवाइजरी फंक्शन होता है. वेरी ऑफन द कोर्ट्स आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस टू द रूलर्स or on any legal matter. For example, the President of India, the power to refer to the Supreme Court any question of law or fact which is of public importance. Similarly, to conduct judicial inquiries, यानी कोई भी जो judicial inquiry है वो भी judiciary के जुमरे में ही आती है. तो यहाँ से आप इसकी functionality का importance. Miscellaneous functions आपके सामने हैं. Beside the above major functions, the judiciary also perform several other functions. The appointment of certain local officials of the court, choosing of a clerical or other employees, cases relating to the grant of licenses, patents, and copyrights, the appointment of the guardians and trustees, the admission of wills, to appoint trustees to look after the property of the minors, to settle the issues of the successions of property and rights, issues of administrating the estates of deceased persons, and the appointment of receivers, naturalization of aliens, marriages and divorce cases, election petitions and like. तो ये इस तमाम जो है
फंक्शंस भी जुडिशरी के ज़ुमरे में ही आते हैं। फर्दर एक इम्पोर्टेंस एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आपके सामने, आप इसकी फर्दर रीडिंग कर लें तो आई बिलीव कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इट्स वेरी सिंपल। मैं इसको यहाँ पे पास करता हूँ और आप इसकी रीडिंग कर लें, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ। सो मैं आमतौर पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर कंटेंट भी ज़्यादा रखता हूँ स्लाइड्स के अंदर। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास जो है डेटा भी बिल्ड हो जाए, और आपके पास जो है वो मटेरियल भी हो, आप रीडिंग करें बाद में तो आपके पास जो है एक बेसिक नॉलेज बिल्ड होने के साथ साथ नोट्स भी किसी हद तक आपके प्रिपेयर होते जाएं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जुडिशरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस जजेस जो जुडिशरी के अंदर होती है। दी जुडिशरी मस्ट have prevented the executive and legislature from committing excesses. The ability of the judiciary to maintain and independently run the judicial administration। तो एक जुडिशरी प्योरली एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपना रोल प्ले करती है, जहाँ पे एक तरफ क्वालिफाइड उसका स्टाफ होता है, जजेस होते हैं, एक्सपीरियंस जजेस होते हैं। फिर वो एक अदारे के तौर पे एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के कामों में मुदाखलत भी नहीं करती, बल्कि एक अपने जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करती है। मीनवाइल वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की चीज़ों को काउंटर भी करती है, मॉनिटर भी करती है। द एबिलिटी ऑफ द judges judiciary to maintain and independently run the judicial administration, and similarly the judiciary must be made the guardian protector of the constitution, or the judiciary must ensure full, fair, less expensive opportunities to the people for defending their rights and getting justice. The method of appointment of judges must be fair, systematic, and effective and transparent. Similarly, the method of removal of judges should be difficult, and no single would have the power to remove the judges. Justice must be paid high salaries, necessary allowances, good service conditions, and the appropriate retirement benefits. By incorporating all these features in the judicial system, a well organized and independent judiciary can be secured. तो ये था आज का लेक्चर डियर फ्रेंड्स। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैंने जुडिशरी की डेफिनेशन आपके सामने रखी, जुडिशरी की इंपॉर्टेंस आपके सामने रखी, जुडिशरी के फंक्शंस आपको बता दिए। उसके बाद जुडिशरी का रोल एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होने चाहिए, उसका रिमूवल कैसे होना चाहिए, उसकी बतौर अदारा जो है सिस्टम कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं गया चीज़ों में, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरीज हैं, तो मैंने जस्ट इसको गो थ्रू किया। आई बिलीव आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो, आपने कोई रीडिंग मटेरियल के बारे में गाइडेंस लेनी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। डेट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।